हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम बैक ट्विंकल स्टडी क्लासेस। सो कल मैंने क्लास 12th का फिज़िक्स का गेस्ट पेपर 2025 का पेपर 1 डाला था। सो टू डेज आई अपलोडेड पेपर 2 गेस्ट पेपर क्लास 12th का फिज़िक्स का पेपर 2 2025 का, वो मैं डालने वाला हूँ। हम सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि पेपर 2 किस टाइप का है, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो आई विल डिस्कस नाउ। फर्स्टली सेक्शन ए, जो कि आपका 70 मार्क्स का है। 3 घंटे आपको दिए जाते हैं और आप ये खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस आप खुद निकाल लेना। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर, options increases with distance is a constant, decreases with distance from center is 0. Second, in a charged capacitor, the energy resides on the positive plate on both positive and negative charge plates in the field between the plates around the edge of the capacitor plates. Third, 1 ampere is equivalent to 1 coulomb second, 1 coulomb second की पावर -1, 1 joule second, 1 joule second की पावर -1. The internal resistance of a cell is the resistance of options: material used in the cell, electrolyte used in the cell, electrodes of the cell, vessel of the cell. The magnetic permeability is maximum for paramagnetic, ferromagnetic, diamagnetic, non-magnetic. A uniform magnetic field is obtained in a bar magnet, a horseshoe magnet, a circular coil carrying a current, a cylindrical coil carrying a current. Next, which of the following radiations has the least wavelength? Alpha rays, beta rays, gamma rays, X-rays. If the light propagating along a straight line bends by a small foot fixed apart, it may be due to reflection, refraction, diffraction, dispersion. The de Broglie wavelength alpha of a particle is related to its kinetic energy E as, यहाँ आप options देख लेना. The main difference between conductors, semiconductors and insulators is because of binding energy of electrons, work function, mobility of electrons, width of फॉरबिडन एनर्जी गैप. सो ये आपका सेक्शन है. अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, जो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम ए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? स्टेट एंड एक्सप्लेन Coulomb's law of force in electrostatics. Find the area of the plates of a 3R parallel plate capacitor if the separation between the plane is 5 mm. On what factors resistivity of the material depends? A galvanometer has a resistance of 60 ohm and a full-scale deflection is produced by 1.0 mA. How will you convert it into a ammeter to read 1 ampere full scale? State Lenz's law. What factors to govern the direction of EMF? The instantaneous voltage from an AC source is given by voltage is equal to 300 sin 314 t. What is the root mean square value of the source? What is displacement current? Explain its cause. Derive the relation between critical angle and refractive index of the medium. So अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. Using Gauss's theorem, derive an expression for electric field at a point due to uniformly charged infinite plane sheet. Apply Kirchhoff's law to obtain the condition of balanced Wheatstone bridge. Define interference of light. Write 4 conditions for obtaining sustained interference. The radii of curvature of the faces of a double convex lens are 10 cm and 12 cm respectively. If the focal length of the lens is 12 cm, find the refractive index of the material of the lens. What is photoelectric effect? Derive the Einstein photoelectric equation. What is binding energy? Explain the significance of binding energy per nucleon in the stability of the nucleus. Write 3 postulates of Bohr's model of atom. Explain the function of p-n junction diode as full wave rectifier by giving a diagram. What are extrinsic semiconductors? Describe p-type semiconductor. अब बात करेंगे सेक्शन डी, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. Draw the label diagram of a moving coil galvanometer. Describe its principle, construction and working. Derive an expression for the force per unit length between 2 long parallel straight current carrying conductors in the same or opposite direction, hence define 1 ampere. Derive an expression for the average power in an AC circuit containing LC and R. State Faraday's laws of electromagnetic induction and explain any one method of producing induced EMF. State Huygens principle, hence derive laws of reflection from it. Or describe construction and working of an astronomical telescope. Calculate its magnifying power in normal adjustment. So ये पूरा पेपर 2 था क्लास 12 फिजिक्स का गैस पेपर.
सो जल्द ही मेरी वीडियो में पेपर 3 भी आएगा। उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए एंड आप भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।